So Logisim में आपके पास दो choices हैं. So I have now switched to Logisim. You can see my screen, bachas. From our perspective, we want to do two things. First, we are going to build a simple, ये हमने अभी किया ना, A B का काम किया है. We're going to build a simple 2-bit adder. अच्छा, Logisim आपके पास दो choices. You have Logisim-evolution. So I'm now on evolution. In the prior classes, I'd used मैंने क्या इस्तेमाल किया था? Prior classes I just used simple Logisim, right? Evolution is newer. Evolution का जो current version है, I think जो current iteration चल रही है या release चल रहा है, version चल रहा है, वो 3.8 चल रहा है. और आप अगर Logisim-evolution 3.8 डाउनलोड पैकेज पे सर्च करेंगे तो आपको एक MSI पैकेज मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, आपको काम हो जाना चाहिए. इफ़ यू हैवंट डाउनलोडेड, डाउनलोड कर लें. अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास चल रहा है, तो उसको अपने पास ऑन कर लें ताकि यू कैन sort of मेरी स्क्रीन को आप साइड बाय साइड चला लें और जो मैं काम करने जाऊँ वो काम आप फॉलो करके देख लें. तो यू कैन sort of do this side by side with me. So now in Logisim we've got a couple of components. So this one is evolution and I also have the regular one. So जो base version है वो पुराना है, as in वो I think 11-12 में अपडेट हुआ था, उसके बाद से अपडेट उसके बाद से रिलीज़ नहीं आया है. और ये जो evolution 3.8 है, I think this was last updated I think maybe in August or possibly 2022. This is more recent. It's more friendly है, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा आसान है, आप आराम से काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हैं. So now the first step is we need pins and हम पहले काम स्टार्ट करेंगे पिन से, उसके बाद हम जाएंगे to other more advanced, more high level input and output choices. तो आप ये पिन चेक करें तो यहाँ पे I don't know if you can see where I have put the mouse. ये जगह है जो मैंने अभी मार्क की हुई है. तो आप अगर इस पे देखेंगे दिस इज़ अ पिन. सो आई नीड 2 पिन्स, राइट? 2 चाहिए ना मुझे, एक A चाहिए, एक B चाहिए. सो आई एम गोना स्टार्ट विद A एंड B. सो आई नीड 2 पिन्स. तो मैंने 2 पिन अपने पास डाउनलोड कर ली. एंड व्हाट आई कैन डू इज़, अगर मैं एक पिन को क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक दिस पिन हियर, दिस पिन पे अगर आप देखें तो से कि जी आउटपुट क्या है, तो दिस इज़ नॉट एन आउटपुट, दिस इज़ एन इनपुट. एंड मुझे इस पर एक लेबल देना है. सो आई एम गोना ऐड अ लेबल एंड दैट लेबल इज गोइंग टू बी A. ये B आ गया, ये A मार्क नहीं हुआ था, इसको A मार्क कर लें. सो अब मैंने दोनों इनपुट्स को मार्क कर लिया है. वी हैड अ ZOR गेट एंड वी हैड एन AND गेट. सो आई हैव अ ZOR गेट हियर एंड आई ब्रिंग दिस ZOR गेट हियर एंड आई हैड एन AND गेट. तो मैं AND गेट को भी ले आता हूँ, तो ये मेरा AND गेट आ गया. और अब अगला काम मैं ये करूँगा कि आई विल जस्ट कनेक्ट माई, इधर ले आए, एक आप इधर ले आए. A को मैंने पहले कनेक्ट किया ZOR से और मैंने B को कनेक्ट किया also with my ZOR gate. So what would this produce? This would produce what? This would produce my, ये क्या कवर कर रहा था? ये sum कवर कर रहा था. What do we do with the AND gate? So AND gate we use for producing carry. तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ ये A से हम एक तार खींच लेते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास A आ गया इसके साथ एंड ये हमारे पास वैल्यू इधर आ गई. और इसकी भी आउटपुट निकाल लें आप. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कैरी आउट. हमें आउटपुट भी चाहिए ना. वी नीड टू ऑल्सो सी कि जी व्हेन वी टर्न दिस ऑन एंड टर्न दिस ऑफ व्हाट्स गोना हैपन. सो लेट्स यूज़ द आउटपुट. तो आउटपुट के लिए अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास पिन है, दिस वॉज जो ओरिजिनल पिन हमने इस्तेमाल की थी, वो हमने इस्तेमाल की थी फॉर एज एन इनपुट पिन. अब हम एक आउटपुट पिन इस्तेमाल करते हैं. सो वील टेक दिस एज एन आउटपुट पिन. इसको हम मार्क कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ. तो ये कनेक्ट हो गई. और एक पिन हम और ले लेते हैं कैरी आउट के लिए. तो ये कैरी आउट की पिन आ गई यहाँ पे, ये भी कनेक्ट हो गई. अच्छा, इस पर वापस जाएँ और इसको भी लेबल लगा दें. सो दिस वुड बी सम. ये हमारा प्रोसेस था. पहले आपने फर्स्ट थिंग दैट यू डिड वाज यू डिड द ट्रूथ टेबल. फिर आपने सर्किट बनाया. अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ट्रूथ टेबल में ये सिनेरियोज बने हुए हैं, राइट? अच्छा, हमारे पास अभी कैरी इन नहीं है, हमने कैरी ने अभी ऐड नहीं किया है. पहले हम सिर्फ पहले 4 लेके कंपेयर करेंगे. तो पहले 4 हमें पता है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. एंड वी नो व्हाट द आउटपुट फॉर दोज वैल्यूज़ आर. सो व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट इज वी वांट टू गो बैक टू आवर मॉडल हियर. एंड इफ यू सी दिस, देयर इज दिस value here that I'm saying change values within the circuit control. So I click on this. So this goes into toggle mode.
अच्छा, टॉगल मोड का फ़ायदा क्या है कि आई कैन टर्न दीज पिन्स ऑन एंड ऑफ बाय हैंड. आई डोंट नीड टू कनेक्ट देम to any other power source or to a clock. I can just turn them by on and off, and then I can see the output on this side. So if I turn this on, abhi right now it's 0 0. If I turn this on, this is now on, and if I turn this on, this is, both of them are on. I'm not sure if you can see. यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 0 and 1 हो रही है, बट यू कांट सी इट. तो आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर द सेक ऑफ आवर क्लास आई एम एक्चुअली गोइंग टू डिलीट दीज टू. इनको मैं उड़ा रहा हूँ. वी विल कम बैक टू देम लेटर बिकॉज यू कांट सी व्हाट्स हैपनिंग. एंड रादर देन यूजिंग आउटपुट आई एम गोइंग टू यूज LED ताकि यू कैन एक्चुअली सी. आई नो स्क्रीन पे मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन फ्रॉम अगर आप फ़ोन पे देखें तो आपको नज़र नहीं आएगा. सो व्हाट आई डू नाउ इज आई एम गोइंग टू गो बैक हियर, आई एम गोइंग टू टर्न एवरीथिंग ऑफ. अच्छा, तो अब LED, बोथ द LEDs are off and both the inputs are A and B are both off, right? So now if I say turn A on, so this is going to be, this, what is this? This is 1 and 0. This is the first case. So 1 and 0 में sum क्या कहता है आपको? Sum should be 1, carry out should be 0. So this is fine. This is the first case. Second case क्या आपके पास? इसको ऑफ कर दें और 0 and 1 कर दें. तो ये 0 and 1 में sum should be 1 and carry out should be 0. This is also fine. फिर आपके पास एक केस और है, दोनों को ऑफ कर दें. A and B, both of them should be turned off. तो इसको ऑफ कर दें. So now both of them are off. And then आपके पास एक तीसरा केस है. And that third case is A is on and B is on. And in this case again we get sum and carry out. What did we just do? ये आपने बनाया था ना यहाँ पे ट्रूथ टेबल अपना, ये बनाया था ना आपने भी इसको सिर्फ टेस्ट किया है. अगर आप 0 0 करेंगे तो बोथ कैरी एंड सम शुड बी 0. अगर आप 0 1 करेंगे तो कैरी शुड बी 0, सम शुड बी 1. 1 0 करेंगे, कैरी शुड बी 0, सम शुड बी 1. 1 1 करेंगे, कैरी शुड बी 1, सम शुड बी 0, राइट. ये आपकी 4 आउटपुट्स हैं. तो आपने अभी क्या किया, आपने टॉगल करके अपने सर्किट को टेस्ट किया है. एंड यू टेस्टेड इट in order to do what? To make sure that the output that you get matches the output that you have in your truth table. So अच्छा, remember ना, as I said earlier, ये तभी हम खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपको, and you are following it through and it making a lot of sense, but very quickly this is going to, for some of you this might be very basic because you've done this multiple times before, but for some of you who are looking at this for the first time, it's very much possible that I may take a turn and you say, oh, where did Jawad go? I'm completely lost. When that happens, stop me and ask me to repeat what we've done. Okay? I know you will have the recording, but the recording आपके पास आज नहीं आएगी, कल भी मुश्किल है, 2-3 दिन निकल जाएंगे इसके अंदर. तो अगर आपके समझ में नहीं आए, कहीं खो जाएं आप and I go too fast or you've sort of missed a point, please do stop me and ask me. So now for us, the next big step is to add carry in. And for carry in, I think what we want to do is, so once again what we'll do is we'll take a, हम अपनी pin ले लेते हैं. So we'll take a pin here. This is going to be my third pin and this pin is going to be, so we will call this carry in. Now what do we do with the carry in की pin? Not so 7425 and 7421 के बच्चे इसका जवाब नहीं दे सकते because you've done this in the class, but 7422 के बच्चे and anybody who's from another section who hasn't done this before, what do you think we should do now? अब क्या करना चाहिए? I know. When you say we need to combine two half adders, for somebody who's not done this before, that's like rocket science or Greek or Latin. मुझे आसान सलीस उर्दू में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए. What should I do now? कैरी इन को मैं क्या करूं? इस सर्किट में आपके सामने सर्किट खड़ा हुआ है, इसमें what do I do with carry in? Taha says one more XOR gate after the XOR gate. अच्छा, तो हमने एक XOR gate और ऐड करना है. तो हमने एक XOR गेट निकाल लिया, यहाँ से XOR गेट ले आए. अब मैं XOR गेट लेके आऊँगा तो XOR गेट अकेला आएगा या कुछ और भी आएगा साथ में उसके? तीसरी इनपुट है ना. You remember this diagram बच्चों? You remember this sequence? ये बना था ना आपने, कैरी इन कैरी आउट, आपने कनेक्ट किया था इसको, राइट. यही करने जा रहे हैं ना, आप एक तीसरी इनपुट ऐड करें. तो आपने दो को ऐड कर लिया, अब आप तीसरी को ऐड करें, दोनों को कंबाइन करें. तो आप बेसिकली
दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करें और हुकअप करें। तो जब आप कनेक्ट करेंगे, हुकअप करेंगे तो क्या आना चाहिए? सिर्फ एक जोर गेट आएगा, कुछ और भी आएगा? सो पहले हम फर्स्ट लेट्स जस्ट डू द जोर गेट एंड द एंड गेट एंड देन वील सी व्हाट वी कैन डू। एंड गेट, आई ब्रिंग द एंड गेट हियर एंड नाउ व्हाट डू आई डू? You guys are running this class, you have to tell me what we should do or not do. I have a XOR gate. So for example, if I look at this XOR gate, right, one of the things that should be clear is ये input आ रही है ना आपके पास sum की, तो XOR gate तो आप sum के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपने कहा कि जी ये जो carry in की वैल्यू आ रही है और ये जो sum आ रहा है, इन दोनों को sum कर दो। तो ये कर लें आप, चलिए ये काम कर लें। तो आसान चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी, मैंने ये कर लिया, इससे आउटपुट निकल आई मेरे पास। अब मैं क्या करूँ? ये मेरे पास एंड गेट है। व्हाट इज दिस एंड गेट फॉर? अगर ये आपके पास कैरी इन भी 1 है और जो ऊपर वाले से ए एंड बी से आपके पास समा है वो भी 1 है, तो व्हाट वुड गो इन दिस एंड गेट? इसमें क्या जाएगा? कैरी इन गोज टू द एंड गेट। सो वन रिकमेंडेशन इज कि जो हमने कैरी इन की वैल्यू ऐड की है, जो हम लेकर आए हैं, नहीं राइट, जो हमने यहाँ पे इधर ऐड कर दी, राइट, इसको हम इसको हम इससे कनेक्ट कर दें। चलें, ये आ गया। दूसरी इनपुट क्या आएगी यहाँ पे? व्हाट वुड द सेकेंड इनपुट बी हियर? व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट XOR गेट कॉल्ड? दिस इज योर सम, राइट? ये जो सम निकाला आपने, राइट? सो यू सेइंग कि इसको कनेक्ट कर दें, ये इधर आ गया आपके पास। अच्छा जी, इसकी आउटपुट निकाल लें। अब इसकी आउटपुट के साथ क्या करें? ये आपके पास आउटपुट आ गई, दिस इज वन आउटपुट। नाउ व्हाट डू यू डू? नाउ व्हाट शुड वी डू? ऐड इन OR गेट। अच्छा, OR गेट मैं ऐड कर देता हूँ। आई विल ऐड दी OR गेट। आप मुझसे कह रहे हैं कहाँ है OR गेट? ये आ गया OR गेट मेरे पास, राइट? तो मैंने एक सिंपल OR गेट ले लिया इधर, लेकिन इस OR गेट में जाएगा क्या? What will go inside this OR gate? Connects to both the AND gates. So एक AND gate ये आपके पास और एक मेरे पास यहाँ से आउटपुट आ रही है, राइट? सो एक AND gate ये आ गया। सो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो आपने निकाला है, दिस इज योर सम, एंड यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगी फ्रॉम दिस OR gate, दिस इज गोइंग टू बी योर कैरी आउट। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन द सेंस कि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ी है। तो लेट मी सी इफ आई कैन मेक मोर स्पेस। और एक LED मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इधर भी लगा लूँ। अब मेरे पास 4 LEDs हैं, राइट? ये मेरा ओरिजिनल सम है, दिस इज द सम ऑफ A एंड B, और ये मेरा कैरी आउट है। So I'm going to call this carry 1. I'm not going to call this carry out. I'm just going to call this carry 1. It's an interim carry, right? जो हमने पहले A and B के साथ किया था। And फिर ये मेरा sum, final sum है, and then this is my carry out. एक हमारे पास जो आसान तरीका है, so I will explain this to you one more time, but एक जो हमारे पास आसान तरीका है, वो एक आसान तरीका क्या है कि हम इससे पहले कि हम इस चीज़ को रिपीट करें, हम सिर्फ ये टेस्ट कर लें। फॉर अ सेकंड अज्यूम करें कि आपके समझ में आ गया है। हम सिर्फ ये टेस्ट कर लें कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, A, B एंड कैरी इन की। उन 3 वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, क्या वो रिज़ल्ट वही है जो हमारे पास आना चाहिए, या उस रिज़ल्ट में कोई मसला है? सो अगर आप अपने ट्रूथ टेबल में चले जाएँ, नाउ यू हैव अ 4-bit ट्रूथ टेबल है, दिस इज़ ऑन दिस साइड। ये आपके पास ट्रूथ टेबल, कैन यू गाइस सी दिस? ये 8 वैल्यूज़ हैं आपके पास, राइट, जो आपने बनाया था, A, B, कैरी इन, कैरी आउट एंड सम। इसकी अच्छी तस्वीर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, विच इज़ ईजियर टू रीड। देयर वी गो। सो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ना आपके पास, C आउट एंड सम, ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं आपकी? ये वैल्यूज़ आर योर, दिस इज़ योर आउटपुट, एंड A, B एंड C इज योर इनपुट। सो ये कितने टेस्ट केसेस हैं हमारे पास? 1, 2, 3, ये 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, A, B एंड C in, एंड 2 हमारे पास आउटपुट्स हैं, C out एंड सम, एंड देन वी हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज। सो अगर आपके पास ये तस्वीर बनी हुई है, या तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसका स्निपेट ले लें,
अगर आपने ये पहले टेबल बनाया तो टेबल को अपने पास खोल लें. What I want you to do is, I want you to, so I'm going to go back to the Logisim model and I'm going to turn the inputs on and off, and you have to come back and tell me whether the simulation works or it doesn't work, whether the values that you're generating and producing are correct or incorrect. So the first setting is A is 0, B is 0 and carry N is 0. So इस case में तो सारी values 0 होनी चाहिए, and we can see the values are 0. Now if I turn A on, which is 1 0 0, इस case में क्या होगा? जो आपका final sum है वो 1 होगा और आपका carry out 0 होगा. If I turn both A and B on, तो आपका final sum क्या हो जाएगा? If A and B are on but carry in is off, then your sum, the output, and your carry out should be 0 and 1. And if all three of them are on, then what happens? Both sum and carry out are out. So हमने कितने scenarios test किए? हमारे पास जो 8 scenarios थे उसमें से हमने, how many have we tested? We've tested 3, the biggest one, right? So now I'm just going to quickly walk through them one by one. So 0 0 0. अच्छा ये जो है ना, जिसको आप इसको उड़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है, because this is going to cause confusion. So I'm going to remove this and I'm going to remove this. These two I'm going to remove. I'm going to remove this also because these are intermediate values, right? So 0 0 0 में sum is 0, carry out is 0. 0 0 1 में turn it on. Sorry. So 0 0 1 where carry in is 1, sum is 1, carry out is 0. Turn this off. 0 1 0 में sum is 1, carry out is 0. 1 0 0 में sum is 1, carry out is 0. 1 1 0 में it is 0 and 1, which is correct. 1 0 1 में it's 0 and 1, which is correct. And then 0 1 1 में it is also 0 and 1. And then finally 1 1 1 में this is correct. So I've walked through all 8 cases by turning these inputs on and off, and then the sum LED and the carry out LED are the two LEDs that have indicated whether the values are correct or incorrect. This was the testing sequence. We had a testing sequence, we built a circuit, then we made a list of all the test cases, all the inputs, all the outputs, and then we compared the inputs and the output across all the scenarios. And that sort of, as long as the circuit could replicate the right output for the right input, we know that the circuit is correct. Now we just try to figure out कि हमने किया कैसे, how did we get here? That's the part, that's the harder part, right? But the easier part, the testing part should be clear, right? अच्छा, एक चीज़ I want to go out and say, as is very important for you to remember this, from our perspective, when we do this work, if you go back to the ITC course, if you look at what we've done so far, when you write code in ITP, when you write code in C or C++, if something doesn't work, it is easy for you to decode it because you've got your watch list, you can trace it, you can see the variables changing on the screen, you can do lots of other variations. If your Excel model doesn't work, if the answer that the Excel model should produce is not being produced, you also have to debug it. Two very different type of debugging are required, right? For the debugging skill set that you use for figuring out why something is not working in your code in C or C++ is different. The debugging skill set that you need to verify, validate whether the Excel spreadsheet that you've done or the pivot table that you've done has the right answer choice is a very different type of skill set. Similarly, here, when we work with digital circuits or with digital logic or with gates, you also need to understand how to debug it. And this is a third different type, a third different variation of debugging. And the objective of showing you these 3 debug cycles or code debug and fix cycles is for you to understand that the fundamental core principles in all 3 instances, whether you debugging code in C, whether you're debugging code in Excel, or we're debugging logic on a logic circuit, the fundamental principle is the same. You need to have a clear sense of what your input is. This
is your input sequence. You must know what this looks like. You must have a clear sense of what your test cases are. And it's only when you have these test cases that you can look at a given output and say this is correct. Or you can look at a given output and say this is not correct. The mistake that we make, especially when we start working with tools like these for the first time, is that we skip this step and we go straight to circuit design. So don't do that. So now, I think the question I want to ask you is, if I asked, a lot of you said कि जी वो OR gate लगा लें यहाँ पे, use this as an OR gate. So take the two carries. This is a carry from A and B, and this is carry in. So you've gotten these two carries. So take these two carries and put them in an OR gate. Why an OR gate? And how did you come with an OR gate? What was your justification? What was your logic for an OR gate? Where is the truth table? Did we build it? Did we talk about it? So if you think about this, right, this is your first carry in. Yeah, this is your carry, right? This is your carry out from A plus B. When you summed A plus B, you had a carry out, right? And this is that carry out. So you have this carry out and then you have this carry in. You have these two together. Why are you putting them out as, and this is your final carry out, your output carry out, right? Why is this going into an OR gate? So अगर आपको याद हो, हमने जब, when we looked at the XOR and the AND gate, how did we get to the XOR and the AND gate? कैसे आए हम? हमने ये टेबल बनाया था ना, और हमने इस टेबल में कहा था कि हमारे पास A है, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास A and B की, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, और फिर हमने कहा था कि उसका आप कैरी और सम निकाल लें, तो हमने कैरी और सम निकाल लिया. फिर हमने कहा कि ये जो कैरी और सम में ये जो है 0 1 1 0, दिस लुक्स लाइक अ XOR गेट, एंड ये जो है कैरी में, दिस लुक्स लाइक अ, what does this look like? This looks like an AND gate. So now think about this for a second. I have two inputs. I have carry in and I have the carry that is generated by A plus B. ये क्या है? ये इनपुट है आपकी. This is an input pin. ये पिछले वाले सर्किट से आ रही है. ये क्या है? ये इंटरमीडिएट वैल्यू है. ये आप अपने सर्किट में बीच में कैलकुलेट करें. तो अब ये जो आपने दो वैल्यूज़ लिए हैं, इनपुट कैरी इन एंड इंटरमीडिएट कैरी, राइट, इनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? दो वेरिएबल्स है ना. सो ये क्या होगा? 0 और 0 होगा. फिर क्या होगा? फिर 0 और 1 हो सकता है, ये पॉसिबल है. फिर क्या हो सकता है? ये 1 और 0 हो सकता है. और क्या हो सकता है? 1 और 1 हो सकता है. चार पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास. सो टेक दीज वैल्यूज. सो दिस इज 1 2 3 and 4 values. So now this is the key part. We're not interested in the sum. We're only interested in carry out, the final carry out. So what does the final carry out look like? When carry in and the intermediate carry is 0 and 0, what would be the final carry out? It should be 0. Yes? Can it be any other value? 0 होगा, कुछ और हो सकता है. 0 and 1. इस केस में क्या होगा? कैरी इन 0 है और इंटरमीडिएट कैरी 1 है. इस केस में क्या होगा? What will happen now? What would be carry out? Carry out would also be 1. And इस केस में क्या होगा? जब इनपुट कैरी इन है और कैरी इन इज 1 एंड कैरी इंटरमीडिएट कैरी 0, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी 1 हो जाएगा. और जो तीसरा केस है हमारे पास 1 and 1, इस केस में क्या होगा? What will happen here? Would it be 0 or would it be 1? अच्छा, अभी इसकी जो एग्जाम्पल है ना, इसकी एग्जाम्पल इज दैट हमने जो सम किया था, एडिशन ऑफ 4 बिट्स किया था, राइट. हमने कहा था कि जी ये 1 लें, ये 1 लें, ये 1 लें, ये 4 वैल्यूज़ दे रहे हैं आप यहाँ पे, और फिर इसके नीचे भी 4 वैल्यूज़ दे रहे हैं. इस केस में क्या हुआ था? हमने केस बनाया था ना, ये हमने कहा था ये हमारा A और B है. फिर हमने इसकी आउटपुट कैलकुलेट की थी कि इस केस में जी ये हमारा सम है और ये हमारा कैरी आउट है, और इस केस में हमने कहा था कि जी यहाँ पे आप कैरी इन ट्रैक कर लें. तो when we added the first two, 1 and 1, what was the sum? Sum was 0. What was carry out? Carry out was 1 or 2. And then what was carry in for the next bit? It was 1. So अब क्या हो गया? अब carry in 1 है और
और जब मैंने कैरी इन को 1 और A और B के साथ ऐड किया तो सम क्या हो जाएगा? What was the value of the sum? Sum was 1 and carry out was 1. And where did this carry out go? It went into the next bit. यहाँ पे क्या हुआ? जब आपने इन तीनों को सम किया तो आपके पास क्या आया? आपके पास 1 और 1 आया, और फिर जब मैंने इन दोनों को, और फिर यहाँ पे भी वापस कैरी इन आ गया, फिर जब मैंने इन तीनों को सम किया तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे भी 1 और 1 आया. And then what did I do? I took the overflow bit and that overflow bit became my final carry in for these guys. A simple sum of 4 bits. Do you follow this? Did you follow this? So now what we're saying is कि ये जो आपने लिया ना, ये carry in, ये carry in, carry in की कितनी, carry in and carry out की जो combinations possible है, कितने combinations possible हैं? 4 ही combinations possible है ना. यही 4 वैल्यूज है ना आपके पास, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो जब 1 1 होगा तो कैरी आउट क्या होगा? अगर कैरी इन भी 1 है, कैरी आउट भी 1 है, सॉरी कैरी इन भी 1 है, इंटीग्रेट कैरी भी 1 है, तो फिर क्या हो गया? 1 आएगा ना, 1 आ गया. एंड व्हाट डज दिस लुक लाइक? दिस लुक्स लाइक एन ऑर गेट. वेरी गुड. सो ये जो हमने ऑर गेट लगाया ना, ये हमने ऑर गेट, वी डिडंट गेस कि इट्स एन ऑर गेट. देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ ट्रूथ टेबल. एंड ये एक बहुत दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल. दिस इज द फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल ऑफ सर्किट डिजाइन. Build the truth table, map the input to the output, and then, as Usman had said earlier, then if you can simplify it, you can simplify it. If you can't simplify it, then there's a separate कहानी, हम उसको बाद में देखेंगे. But the first step is build the truth table, map all the possible combination of inputs to all possible valid outputs, and then figure out what should be the combination of gates that you should use to build this. एक आपके पास कॉन्सेप्ट है, where am I? If I go to mean, अच्छा जी. So I'm going to save this project. Let me save this, save as. I'm going to do this again because some of you said कि दोबारा करके बताएं कैसे करना है. Very very quickly, very very fast. So I'm going to say 4-bit adder 7422 on 11th November. ये हो गया. अच्छा भाई, एक तो ये नाजुक बहुत हैं, जल्दी नाराज हो जाती हैं अगर आप नाम साना रखें. सो 4-bit adder 7422 11th November. चलें जी. So I'm going to open a new file, and because you'd asked me to do it, I'm going to do it again. But now I'm not going to use the क्या नहीं इस्तेमाल करा मैं? I'm not going to use the LEDs. I'm going to use inputs and outputs. So this is one. अच्छा, एक काम और करें, इस इधर ना करें, इसके नीचे एक सर्किट ऐड कर लें. So ये एक important component है, add a circuit, and I'm going to call this 2-bit adder. नाम दे दें इसको प्रॉपर, इसको कह दें 2-bit. Add a circuit. Oh भाई, चलें. Let's call this project add circuit. हाँ जी. सो ये हमारा 2-bit एडर का सर्किट बन गया है, राइट. सर ये हमारा मेन का सर्किट है. मेन के सर्किट में हम सिर्फ एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं. दिस इज जस्ट, वी जस्ट पुट दिस इन हियर. विल कम बैक टू इट लेटर. गो बैक टू 2-bit एडर, डबल क्लिक ऑन दिस सो दैट वी गेट हियर. दिस वाज मेन. ओके, सो इसमें एक गेट डाल दें ताकि हम उस गेट को बाद में इस्तेमाल कर लें.
So I'm going to go to 2-bit adder, and I'm going to do this specifically because I want to change something here. So now what I'm going to do is I'm going to add, जो हमने gates बनाए हैं, I'm going to build those gates here very quickly. So हमारे पास 3 inputs हैं. पहली input is A, and let's give it a label. This is A. दूसरी input is B, give it a label. तीसरी input is carry in. Give it a label. तो ये हमारे पास 3 labels आ गए. अब क्या चाहिए था आपको? आपने कहा था कि आपको एक XOR गेट चाहिए एंड आपको एक AND गेट चाहिए. तो ये आपने 2 यहाँ ले लिए. फिर आपको एक XOR गेट और चाहिए फॉर द सेकेंड, एंड आपको एक AND गेट और चाहिए, और आपको एक OR गेट चाहिए आगे जाके. राइट, देयर वी गो. ये 3 चीज़ें. ये इसको थोड़ा सा इधर ले आए, ये यहाँ आ गया. हम वही सर्किट दोबारा बना रहे हैं. Screen is stuck. Okay, let me stop this and share it. So 1 2 3 4. Can you see it now? अब नजर आ रही है आपको? Guys, you can see it. So I'm going to the untitled screen here. अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, इस पैकेज में मैं क्या कर रहा हूँ? इस पैकेज में I am adding this. I'm going to save this as this is going to be my subcircuit. Subcircuit adder. Gee, can you see the screen where I have 3 inputs A, B, C, and I have 5 gates that I haven't connected? Alright, listen now. अच्छा, अब क्या स्टेप है हमारे पास? पहला स्टेप ये है कि हमने ये एक हमारी इनपुट यहाँ पे A की, ये एक इनपुट यहाँ पे B की, इन दोनों को कनेक्ट कर लें. So this you've done, right? So हम इसको जानबूझ के रिपीट करें ताकि आपके पास आपको तकलीफ ना हो और आपको याद रहे कि हमने क्या किया. ये आ गया. फिर आपने इसको कनेक्ट किया, फिर ये आपकी सम की आउटपुट इधर से आ गई, ये आपकी कैरी की आउटपुट इधर से आ गई. ये आपके पास 2 गेट्स हैं, इनको आप करीब ले आएँ ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए. इसको भी करीब ले आएँ, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, और इसको यहाँ ले आएँ. अच्छा जी. अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये किया कि ये सम की आउटपुट थी, इसके साथ क्या करना था हमने? याद है आपको? Where did this go? What did you do with it? You did something with it, right? Do you remember? Where is this going to go? मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है. हाँ, XOR gate. There you go. So Taha is right. So this goes into the XOR gate, and then what about this? ये क्या? ये तो कैरी है ना? Where does this go? This carry goes into the second AND gate, और ये जो आपका कैरी है ना, ये कहाँ जाएगा? ये भी इसी AND गेट में जाएगा. इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आराम से कनेक्ट, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर जाए. ये आपके पास AND गेट में आ गया. इसमें इस XOR गेट में सेकंड इनपुट कहाँ से आएगी? ये जो मेरे पास सेकंड XOR गेट है यहाँ पे, राइट, नंबर 2, इसमें इनपुट कहाँ से आएगी? इसमें इनपुट आएगी कैरी इन से. सो तहाँ से इसके कैरी इन से इसको कनेक्ट कर लें. ये आपका कैरी इन आ गया. एंड अब क्या है? अब आपके पास ये आउटपुट आ गई. ये आउटपुट क्या है आपकी? व्हाट इज दिस आउटपुट? What is this output? This is sum. यार तुम लोग तो बहुत तेज़ हो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. अच्छा, सो फिर अब ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है, ये क्या आ रही है? ये
किधर जाएगी? ये आपका इंटरमीडिएट कैरी इन के साथ है ना, सो इसको कहाँ लेके जाएंगे आप? इसको आप इससे कनेक्ट करें, और इसमें दूसरी इनपुट कहाँ से आएगी? Where will the second input come from? In this OR gate. हाँ, तो फर्स्ट को तो मैंने कर दिया, फर्स्ट एंड गेट. ओके, सो यू सेइंग दिस वन, यहाँ से कह रहे हैं आप, इधर से ले आए, दैट्स व्हाट यू सेइंग, राइट? तो ये जो आपकी इंटरमीडिएट कैरी थी, आप कह रहे हैं आप इसको यहाँ ले आए. कनेक्ट हो गया. ये आपकी क्या आएगी? दिस इज गोइंग टू बी योर कैरी आउट. तो आपके पास दो आउटपुट्स हैं, तो अब हम एलईडी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम पिन इस्तेमाल करेंगे. तो एक पिन हमने यहाँ कनेक्ट कर दी और एक आउटपुट की पिन हमने यहाँ कनेक्ट कर दी. तो आप कैन यू सी दिस? किट सेज 0 0. कैन यू सी दिस? ये नजर आ रही है आपको? यू कैन सी, राइट? दिस इज 0 एंड दिस इज 0. एक काम करते हैं, लेट्स टेस्ट द सर्किट फर्स्ट, ताकि हम पहले एलईडी इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर जो है हम देन वी कैन प्लग द पिन्स इन लेटर. तो लेट्स जस्ट टेस्ट द फैक्ट कि द सर्किट सही चलता है नहीं चलता. वंस द सर्किट इज वर्किंग, उसके वंस यू नो फॉर अ फैक्ट कि द सर्किट इज वर्किंग, देन वी विल कनेक्ट इट. सो सर्किट हमने कैसे टेस्ट किया था लास्ट टाइम? हाउ डू यू नो कि मैंने कुछ घपला नहीं किया इस दफ़ा? एक एलईडी यहाँ लगाएं, एक एलईडी यहाँ लगाएं. 8 टेस्ट केसेस हैं आपके पास, वो 8 टेस्ट केसेस टेस्ट कर लें. सो आई एम गोना क्विकली टेस्ट द टेस्ट केसेस अगेन. क्या किया मैंने? ए को टॉगल किया, सो आई यूज द टॉगल स्विच. 0 0 0 0 में क्या है? 0 0 0 में दोनों ऑफ हैं. 0 0 1 कैरी इन में क्या है? सम इज ऑन एंड कैरी इज ऑफ. 0 0 1 0 में क्या है? सम इज ऑन, कैरी इज ऑफ. 1 0 0 में क्या है? सम इज ऑन, कैरी इज ऑफ. एंड देन 1 0 1 में क्या है? ओह, 1 0 1 में इट्स ब्रोकन. डू यू सी? इस केस में क्या होगा? नजर आ रहा है आपको? देयर इज अ प्रॉब्लम. तो योर सर्किट इज ब्रोकन. यस, दिस इज रॉन्ग. सो व्हाई इज इट रॉन्ग? व्हाट डिड वी मिस? मैं तो सिर्फ ताहा की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था. ये ताहा की गलती है. अब ताहा से पूछें ताहा ने कहाँ घपला किया है. ताहा मियाँ बताएं आप, व्हाट हैव वी डन रॉन्ग? सोचें आप जितनी में मैं इसके लेबल सही कर लेता हूँ. सम एंड दिस इज कैरी आउट. Second AND gate has the wrong input, and the AND gate should be connected. Okay, so he says the second AND gate is the input is wrong. इस केस में the second AND gate में the input is wrong, and so इसको हटा दें आप, ये गलत है. तो इसको उड़ा दें यहाँ से, इसको भी उड़ा दें यहाँ से, इसको भी उड़ा दें यहाँ से, इसको भी उड़ा दें. सो किससे कनेक्ट होना चाहिए इसको? Who should be connected to? ये तो मैं बताया, ये सही है, राइट? दिस इज फाइन, दिस वी आर ओके विद. यहाँ पे क्या आएगा? What should come here? First और there you go, सम आना चाहिए. सो आप ये लें और इसको कनेक्ट कर दें. ठीक है जी. Alright, are you happy with this? कोई और चेंज करना है? Anything else? रुशना, हमना, anything else you like to change? This makes sense? Shall we test it? Test कर लें. Okay, so let's test it. सब बंद कर दें. Everything is off. So all three of them are off, right? So it's A, B and carry in. All three of them are off. Output is sum and carry out of both 0 0. 0 0 1. 1 and 0, which is fine. 0 1 0 1 and 0, which is fine. 1 0 0, which is fine. Then 1 0 1, that makes sense. Then
0 1 1, that's also fine. Then 1 1 0, that is also fine. And then 1 1 1, and is that right? So we done all the test cases. Test cases work. साथ वो देख लो, तुम वायरिंग चेक कर लो. वायरिंग में समटाइम्स दे माइट बी तुमने कोई गलत चीज़ कनेक्ट की होगी, एंड मैं आपको स्लाइड डेक्स भी भेज दूंगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज फिगर आउट कि सही चीज़ सही कनेक्ट हुई है. आमतौर पे गलती क्या होती है कि हम, सो द रूल इन दिस स्पेसिफिक केस फॉर द हाफ एडर सर्किट इज व्हाट, that you have a cascading sum and you have a cascading carry. You just have to make sure the cascade is done correctly. If that cascade is even slightly off, जैसे आपने देखा ना, हमने उसको जो हमारा, मैं इसको पहले भी इसको भी मार्क कर दूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए. So this is your intermediate sum and this is your intermediate carry. Okay, this was your intermediate sum and this was your intermediate carry, and this was your final sum and this was your carry out. ठीक है, perfect. Alright, so साथ is also fine. अच्छा, तो अब हमने, now that we've tested this, what do we need to do? We need to replace the LEDs with the actual pins. तो हम pins ले आते हैं अपनी. Pins हमारे पास कहाँ हैं? पिन ये नहीं, आउटपुट की पिन ये रही. तो ये हमारे पास आउटपुट की पिन आ गई और ये भी एक आउटपुट की पिन थी. ये दोनों पिन आ गई. अब इसको हमें लेबल देना है ताकि हम लेबल कर सकें. सो ये आउटपुट की पिन क्या है? ये आउटपुट की पिन का नाम दें आप. इसको नाम दें दिस इज सम, एंड ये आउटपुट की पिन कौन सी है? दिस आउटपुट की पिन इज, व्हाट इज दिस? दिस इज कैरी आउट. दोनों पिन लेबल हो गई. तो आपके पास 3 पिन आ गई यहाँ पे, A, B एंड C, एंड सम एंड सम. अब नाउ दिस इज द फन पार्ट.